all these statements, all these theories that we'll be studying about gas is based on certain assumptions. So let's talk about the assumptions about gas. सबसे पहला assumption है गैस के बारे में, that the gas is an ideal gas. Point. ठीक है, ideal gas. There is no force of attraction or repulsion between repulsion भी या interactive force. There is no force of attraction, repulsion between two gas या ideal gas molecules. Among gas molecules. ठीक है. So basically we have studied in a chapter called as work power energy that total energy, total mechanical energy of any body is made up of kinetic energy plus potential energy. Right. This potential energy comes from interaction of bodies. ठीक है. So the moment there is no interaction between particles, this potential energy terms becomes zero for gases, ideal gas. ठीक है. This will not be the case in real gases. In real gases there will be potential energy also. So for ideal gases, energy or internal energy means sum of kinetic energy of all its molecules. उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम है ना गुरशीष, उन सब पर काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दें, दैट इज द एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस. ठीक है. तो लाइक मैं आपको एक सेकेंड जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा गुरशीष कि दुनिया में हर गैस मॉलिक्यूल जो है, दो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा. अब मुझे इंश्योर करना है कि उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन नहीं हो. तो कोई भी दो बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगा. एंड आई वांट कि वो इंटरेक्ट नहीं करें, मतलब उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो. तो हम क्या करते हैं, उन दोनों बॉडीज को इनफाइनाइटली सेपरेट कर देते हैं, मतलब बहुत दूर लेके चले जाते हैं कंपेयर टू देयर साइज. पार्टिकल्स को, गैस पार्टिकल्स, मतलब जो भी दो पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटेशन में भी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में भी करते हैं. अच्छा. कि कोई भी दो बॉडीज को बहुत दूर लेके चले गए. बहुत दूर का मतलब हो गया कि उनके साइज के कंपैरिजन में उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत लार्ज. तो फिर उनके बीच में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है. ओके. सो व्हेन पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, they stop interacting and potential energy becomes zero. Got it? So therefore a gas behaves as ideal gas under low pressure and high temperature. लो प्रेशर आप करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर चला जाएगा. प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पास आ जाएगा. सिमिलरली विद टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रहेगा, पास है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो दे मूव अपार्ट. राइट. सो under this two condition you can assume that a gas is acting as a ideal gas. यहाँ तक समझ में आया गुरशीष? Yes.
So at minus 30-40 degrees Celsius, the gas will not be an ideal gas, it will behave as real gas. Okay. Second point, that the size of gas molecules or atom is very small or negligible. ये जो गैस मॉलिक्यूल या एटम होते हैं इनका साइज बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है? नेग्लिजिबल क्यों अज्यूम कर रहे हैं? अपनी वॉल्यूम ना हो such that so that the volume of container is the volume of gas. else क्या हो जाएगा? यदि मॉलिक्यूल साइज बहुत बड़ा होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. So that is what van der Waal equation is all about. Van der Waal equation यदि आपको पता होगा तो p plus a by n square होता है, मतलब p में एक टर्म ऐड होता है और b में से एक टर्म सब्ट्रैक्ट होता है. करेक्ट. हाँ, मतलब इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, इसलिए प्रेशर में एक टर्म ऐड हो जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. हाँ, राइट. That is about real gases. ठीक है. Then the third point here, that जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे तो हम ये मानेंगे कि ऑल द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स विथ अदर मॉलिक्यूल्स और एटम और कंटेनर वॉल is perfectly elastic so that there is no loss of energy. Then fourth assumption that we will take here, that the atom molecules follows Newton's law of motion and momentum change during their motion. इस assumption पे इसके थ्रू ही वो derivation कर रखा है कि after assuming this